Hello, dear friends. Welcome to my channel In-Depth Analysis with Nitish. So here I'm with you in front of you live on my channel, and I'm going to discuss with you the games, the sports, the cricket games which are going around the world. And we have got quite a few fantastic games, and prediction have went wrong for many cricket experts and analysts. First of all, I am going to discuss about tomorrow's game between India versus West Indies. I told you I have discussed, I have analyzed about the team's analysis of India, and Shikhar Dhawan is leading the side for the Indian team, which is touring to West Indies and which starts at Trinidad in Trinidad at Port of Spain. और ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सॉरी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैंने बोल दिया क्योंकि रिसेंटली इंग्लैंड को सीरीज हराई है इंडियन टीम और वेस्ट इंडीज रवाना हो गई थे उसके अगले दिन और कल से बिटवीन इंडिया और इंग्लैंड और इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में जो 2 दिन का गैप है बहुत कम दिनों का गैप है बट वो जो टीम जा रही है वो अलग टीम है वो इंग्लैंड वाली टीम से बिल्कुल डिफरेंट है उसमें कुछ जो खेलते हुए आ रहे हैं नए चेहरे वो है उनको चांस दिया गया है और उस टीम को लीड कर रहे हैं नन अदर देन द एक्सपीरियंस मैन शिखर धवन और शिखर धवन की कप्तानी में पिछले साल जब इंडिया गई थी एक दौरे पे श्रीलंका के दौरे पर ओडीआई और टी20आई सीरीज तो वहां पे उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने फतह किया था 2-1 से सीरीज और कल से स्टार्ट हो रहा है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का दौरा और कल शाम से ये मैच होगा अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तो डिस्कस करते हैं कि किस तरह का टीम होने वाला है उधर से वेस्ट इंडीज के टीम की तरफ से कप्तानी का जिम्मा संभाल रहे हैं निकोलस पूरन है जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है 4-5 पे बैटिंग करने आए थे कभी 4 कभी 5 लेकिन जनरली इधर कुछ रिसेंट टाइम से उनका देखा गया तो बैटिंग स्पॉट है वो नंबर 4 पे है तो सेकंड डाउन ही इज गोइंग टू कम एट सेकंड डाउन प्रोबेबली और देखते हैं इंटरेस्टिंग गेम्स होगा ये वाला जो वेस्ट इंडीज का दौरा है क्योंकि निकोलस पूरन की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आया है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स उनके लिए है और वेस्ट इंडीज का दौरा इंडिया फ्रीक्वेंटली कर रही है पिछले अगर 6-7 सालों से देखा जाए तो वहां पे देखा जाए तो वेस्ट इंडीज का पिछला जब दौरा हुआ था जस्ट आफ्टर द चैंपियंस ट्रॉफी 2017 उसके बाद शायद उसके बाद दौरा हुआ था कंफर्म है एक सेकेंड हाँ उसके बाद दौरा हुआ था 2017 के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के बाद दौरा की थी इंडियन टीम में अंडर द लीडरशिप ऑफ विराट कोहली और विराट कोहली उस समय बेहतरीन फॉर्म में थे और अपने बेहतरीन फॉर्म के बदौलत वहां पर उन्होंने शतक भी जड़ा था और इंडिया ने सीरीज जीता था वो 3-1 से 1 में पानी पड़ गया था तो यहाँ पे देखना पड़ेगा इंडिया किस तरह से परफॉर्मेंस देती है शिखर धवन एक्सपीरियंस मैन है एक्सपीरियंस कैंपेनर और ही इज गोइंग टू लीड द साइड एंड उसमें हुडा है सूर्य कुमार यादव है हार्दिक पांड्या है तो काफी मजेदार सीरीज होगा और वेस्ट इंडीज की ये साइड जो है इसमें भी विस्फोटक कुछ बल्लेबाज हैं जैसे रॉबमैन पॉवेल निकोलस पूरन एवन लुइस ये सब थोड़े से अच्छे फिर जेडिन सिल्स बॉलर्स में हैं रोज खेल रहे कि नहीं इनके बारे में पता नहीं लेकिन जेडिन सिल्स हैं अकिल हुसैन हैं और फिर वो स्पिनर उनके लेग स्पिनर में नाम भूल रहा हूँ वो हैं तो काफी अच्छी क्रिकेट होने वाली है वेस्ट इंडीज में और वेस्ट इंडीज तो फाइट बैक डेफिनेटली दिखाएगी यहाँ पे और 3 ओडीआई मैच का ये सीरीज है 3 ओडीआई मैचेस टू बी प्लेड इन दिस सीरीज एंड 5 टी20आईज में रोहित शर्मा ज्वाइन करेंगे ऋषभ पंत ज्वाइन करेंगे उस टीम में तो जो ये वाली टीम है ये बिल्कुल जो आयरलैंड की टीम है वही खेल रही है यहाँ पे वेस्ट इंडीज के साथ और ये जो मेरा दूसरा पॉइंट था वहां पे यहाँ पे इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच साउथ अफ्रीका टूर कर रही है इंग्लैंड का जैसे ही खत्म हुआ उसमें भी कोई गैप नहीं मिला लगभग 2 दिनों का गैप मिला था लगता है शायद दूसरा ही तीसरा दिन मतलब
आज अगर मैच खत्म हुआ है इंडिया इंग्लैंड का, तो परसों फिर नया सीरीज इंग्लैंड का स्टार्ट हो गया है। और इंग्लैंड के तरफ से ये खबर आया है, ये तो काफी अब पुराना हो गया, कि बेन स्टोक्स ने ओडीआई क्रिकेट से T20 फॉर्मेट वो खेलते रहेंगे, और टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट, टेस्ट क्रिकेट में वो क्योंकि कैप्टन है, he is going to lead the side in the test format, but he is taking retirement. He took the retirement from the ODI format, and this is a really worrying signs in terms of I'm talking about the ODI format, क्योंकि अब ODI format कब होने वाला है इंग्लैंड का, या इवन इफ यू टॉक अबाउट साउथ अफ्रीका का, पता नहीं। बट स्टोक्स एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे और काफी जल्दी उन्होंने ले लिया एक फॉर्मेट से रिटायरमेंट। हालांकि वो दो कंटिन्यू करते रहेंगे, दोनों फॉर्मेट, टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट और T20 सीरीज। T20 का जो भी गेम्स होगा वो कंटिन्यू करेंगे, और लीग्स में तो वो खेलेंगे ही। तो ये थोड़ा सा इंग्लैंड के लिए थोड़ा सा झटका है, क्योंकि यहाँ से हालिया फॉर्म अगर इंग्लैंड का देखा जाए, तो हाल में जब साउथ अफ्रीका आई है इंग्लैंड का दौरा करने, तो 3 T20 और 3 ओडीआई सीरीज है हुआ है। तो पहला ओडीआई जो हुआ था परसों, उसमें साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज जो नंबर 3 पर पोजीशन पे बैट करते हैं, फर्स्ट डाउन आते हैं, रसीवर्धन, जो टेक्निकली बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं, उन्होंने जबरदस्त शानदार शतकीय पारी खेली है, 133 रनों की खेली थी, और उन्होंने 133 चल से स्ट्रीट में हुआ था वो गेम, और वो उस मैच में 133 रनों की पार्टनरशिप करके, 133 रनों की पार्टनरशिप करके वो उनकी टीम ने बनाए, और बीच में 50 रनों की पारी भी खेली, मार्करम ने, यानमन मलान ने खेली, और उन्होंने अपने स्कोर को पहुंचा दिया 333 रन, और उस पिच पर बहुत था। हालांकि साउथ अफ्रीका ने कुछ ठीक शुरुआत की, बट मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुआ, और मिडिल ऑर्डर में रन नहीं बने, थोड़ा सा पिच स्लो हो गया। तबरेज शमसी ने काफी बेहतरीन बॉलिंग की, वहां पे एनरिक नॉटिये ने की बॉलिंग, और 4 विकेट नॉटिये ने झटके, तो वहां पे हार गया इंग्लैंड अपना पहला ओडीआई साउथ अफ्रीका से भी। तो इंग्लैंड का हार का सिलसिला रुक नहीं रहा है। पहला T20 सीरीज में इंडिया ने उसको इस इंग्लैंड टीम को मात दिया, और फिर उसके बाद ओडीआई सीरीज में ऋषभ पंत की बेहतरीन शतकीय पारी के बदौलत एक एक ऐसा सिचुएशन जहां से इंडिया मैच जीत नहीं सकता था, वहां से ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या के बीच जो पार्टनरशिप हुआ 130-35 रनों का, वहां से फिर मोमेंटम बदला, और जबरदस्त पारी खेली ऋषभ पंत ने। और हैट्स ऑफ टू ऋषभ पंत, व्हाट द टाइप ऑफ इनिंग he played against a good quality England side। ऐसा लग रहा था कि इंडिया वो मैच हार जाएगी, बट एट द हाफ वे स्टेज जब हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत के बीच मोमेंटम लगा, तो लग रहा था कि और क्लोज चला जाए, फिर लगा कि इंडिया मैच जीत जाएगी। व्हेन द रन्स कम्स अंडर 60 रन्स, तो ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ बैटिंग की, और एक ओवर में डेविड विली को उन्होंने लगा दिए थे 5 लगातार चौके, और छठा जो बॉल था उसमें वो सिंगल ले लिया टैप करके। थोड़ा सा बॉल भी थोड़ा सा अच्छा था वो मारने, लेकिन डेफिनेटली ही हैज प्लेड अ वंडरफुल नॉक ऑफ हिज लाइफ, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग मैं कहूंगा। अगर 10 बेस्ट इनिंग है तो ऋषभ पंत का ये वाला इनिंग तो आएगा ही डेफिनेटली उसमें। फिर साउथ अफ्रीका जीत चुकी है यहाँ पर पहला ओडीआई, और कल फिर से होने वाला है सेकंड ओडीआई अगेंस्ट इंग्लैंड। वंस अगेन इंग्लैंड के मैं स्कोर बोर्ड बता देता हूँ, 333 पर 5 साउथ अफ्रीका ने अपने इनिंग में बनाए थे 50 ओवर खेल के, और इंग्लैंड सिर्फ बना पाई 271 रन, और 271 रन बना के इंग्लैंड ऑल आउट हो गई यहाँ पे, और मैच लगभग हार गई इंग्लैंड 33 और इधर 29। 60 रनों से मैच को हरा दिया साउथ अफ्रीका की टीम ने। तो साउथ अफ्रीका टीम भी एक बहुत ही तगड़ी साइड है, उनके बैट्समैन जो हैं उन्होंने सफल किया अपना बैटिंग ऑर्डर। उनके कुछ बैट्समैन जो लेके चले हैं टीम को, जैसे रसीवर्धन, एडन मार्करम, फिर टेम्बा बबूमा भी इंजर्ड है, नहीं तो वो भी इसका हिस्सा रहते हैं। तो
तो देखा जाए ऑल इन ऑल देखा जाए तो साउथ अफ्रीका की एक तगड़ी साइड है इन ऑल द थ्री फॉर्मेट्स। और इंग्लैंड थोड़ा सा डाउनफॉल चल रही है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। जब मैच वो हारी तो दिखा दिखा वो बेन स्टोक्स जब आउट हुए तो देखा मिडिल ऑर्डर अंडर कम्स अंडर ह्यूज प्रेशर ऑन दैट डे। और फिर वही जो रूट पर निर्भर रहना टोटली। जॉनी बेस्टो ऊपर से अच्छा स्टार्ट दे पाए बट ओडीआई फॉर्मेट व्हाइट बॉल क्रिकेट में उतना अच्छा कामयाबी उनको नहीं मिल पा रहा है। तो देखा जाए तो इंग्लैंड का थोड़ा सा स्लाइड हो रहा है व्हाइट बॉल फॉर्मेट में। हालांकि टीम जो अपोजिशन टीम है वो मैच करती है इसीलिए शायद इंग्लैंड हार रही है। अगर ये टीम थोड़ी सी अगर लोअर रैंक की टीम होगी जो मिडिल टीयर की टीम होगी तो शायद इंग्लैंड मजबूत दिखाई दे। लेकिन क्योंकि टॉप क्लास टीम के अगेंस्ट खेल रही है इंग्लैंड, अभी साउथ अफ्रीका हुआ, पिछला इंडिया हुआ, तो डेफिनेटली उसका तो असर दिखेगा। और और इंग्लैंड थोड़ा सा व्हाइट बॉल फॉर्मेट में थोड़ा सा डिक्लाइनिंग फेज में है। नो डाउट इंग्लैंड विल कम बैक और उनकी टीम अच्छी है और उनके पास बॉलर्स हैं, उनके पास ऑलराउंडर्स हैं, बैट्समैन हैं, बैटर्स हैं, तो इंग्लैंड टीम तो अच्छा करेगी। और फिर यहाँ पर इंडिया इंग्लैंड का बात हो गया। इंडिया वेस्ट इंडीज के बीच में जो कल का मुकाबला होने वाला है वहाँ थोड़ा सा मैच में देखना पड़ेगा किस तरह का विकेट रहता है। विकेट थोड़ा वेस्ट इंडीज में उस तरह का नहीं रहता कि हमेशा आप 300 350 बना दे। हाँ, पर एक अच्छा स्कोर का उम्मीद कर सकते हैं। दो 270 280 इवन क्लोज टू 300, नहीं तो यहाँ पर 240 250 भी बनता है तो एक अच्छा स्कोर होगा, फाइटिंग स्कोर होगा। वेस्ट इंडीज का स्टैट्स वो अब थोड़ा सा पिच में भी चेंजेस हुआ है यहाँ पर रिसेंटली अगर देखा जाए तो, क्योंकि टेस्ट मैचेस में चेस हो रहा है। वनडे में देखा जाए तो ओडीआईस में आपको सेकंड बैटिंग थोड़ा स्ट्रगल करती दिख रही है टीमें, जैसा जैसा पहले होता है था वे बैक 12-15 इयर्स बैक। अगर अगर चले जाते थे तो वही ट्रेंड चलता चला रहा है। लेकिन टेस्ट मैचेस में डेफिनेटली थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है यहाँ पे। और पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में जो वो मैच हुआ है जो कल खत्म हुआ है 5th डे, और कितने लोगों ने प्रेडिक्ट किया था, मुझे भी लग रहा था कि पाकिस्तान चेस नहीं कर पाएगी। बट 4th डे हुआ है वहां पे शक हो रहा था वहां पे, क्योंकि जिस तरह का पार्टनरशिप क्रिएट हुआ था और पिच में जो जान था वो थोड़ा सा आपको, बट स्टिल 300 प्लस रन बहुत होता है किसी भी टीम के लिए चेस कर देना। और 300 प्लस रन और चेस करवा देना भी एक डिमेरिट है किसी भी टीम का, क्योंकि इसमें डेफिनेटली आपका लूप होल्स नजर आ गया है किसी भी टीम के लिए। बट अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम एंड दिस प्लेयर्स हैव प्लेड वेल। इवन इमामुल हक ने भी अच्छा साझेदारी किया। बट टोटलिटी देखा जाए तो एक खिलाड़ी के चलते पाकिस्तान ये गेम जीत गया है, वो भी अब्दुल्ला शफीक जो नए खिलाड़ी है। अभी उनका मुश्किल से 5 गेम हुआ था और ये 6th गेम था। तो अब्दुल्ला शफीक हैज प्लेड आई थिंक द फाइनेस्ट नॉक ऑफ हिज लाइफ। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का नॉक अगर वो दोबारा खेल लेंगे तो डेफिनेटली अगर वो दोबारा खेलते हैं तो वो लिस्ट में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, जिस लिस्ट में मिनी ग्रेट्स। और अगर ये इस तरह का खेलते हैं तो डेफिनेटली with his bat I think he will win the Pakistan cricket team more games, ज्यादा गेम्स वो जितवा सकते हैं। तो जिस तरह के पंत ने पारी खेला है उसी तरह के यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक ने, लेकिन फॉर्मेट डिफरेंट है, बट अब्दुल्ला शफीक ने रेजिलियंस शो किया था। मैं बता देता हूँ कि पिच जब पिच थोड़ा सा खुला था, मतलब बैटिंग के लिए हुआ था अनुकूल एट द बिगिनिंग ऑफ डे 4, और लग रहा था कि पिच में थोड़ा सा जो जान था
जो टर्न तो था पर स्लो टर्न था, बहुत ज्यादा स्लो था, और श्रीलंका में ऐसा पाया जाता है। तो ये मैच पाकिस्तान जीत के अपना चांसेस बहुत ज्यादा, पाकिस्तान हैज क्रिएटेड, क्रिकेट टीम हैज क्रिएटेड more chances for their qualification for the world test championship final. But it's a long way to go, I'm telling you, it's a long way to go. They have to cross many hurdles, they have to cross tough and many hurdles. On the other hand side, I think there is a bleak chance, a slim chance for Sri Lanka team, cricket team, to make it to the top two of the World Test Championship. लास्ट वीक लग रहा था कि श्रीलंका ने छलांग मार दिया, लेकिन मुझे पता था कि ये टीम श्रीलंकन टीम को बनने में अभी टाइम लगेगा। हालांकि ये जो टेस्ट टीम है इसमें सारे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, सभी 40, 50, 70, 100 मैचेस कितनों ने 90 मैच कितनों ने खेला हुआ है। तो ये एक एक्सपीरियंस साइड थी, और श्रीलंका को गोल में हराना, हालांकि पिछला अगर रिसेंट पास्ट देखा जाए तो गोल में श्रीलंका काफी ज्यादा मैच हार रही थी। तो ये तो कोई आश्चर्य का बात नहीं था कि श्रीलंका हारी है गोल में। हाँ, this is definitely a very I think very proud moment for, and very proud का बात है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कि 300 प्लस का स्कोर चेस किया है। तो मैं बता देता हूं यहाँ पर कि पाकिस्तान ने श्रीलंका के अलावा किसी भी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट 300 प्लस का स्कोर चेस नहीं किया है इन द रिसेंट 10 से 15 साल के बीच में। तो मैं बता देता हूँ, पहला जो चेस हुआ था वो 300 रन, 301, 302 का टारगेट था। श्रीलंका वो ड्रॉ के लिए था, सीरीज ड्रॉ के लिए शारजाह में था वो, और वो 2 सेशन में चेस करना था, श्रीलंका ने कर दिया। श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान ने कर दिया, अजहर अली का शतक उसमें आया था। फिर 2015 में अगर आप आते हैं तो 380 का चेस करवाया था श्रीलंकन की बॉलिंग ने पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान ने श्रीलंका के अगेंस्ट चेस कर दिया। अब गोल में 342 का चेस भी श्रीलंका ने करवा दिया पाकिस्तान से, और पाकिस्तान हैज प्लेड वेल। आई थिंक दिस गेम हैज वेंट एप्स एंड फ्लो। ये जो गेम गया है ऊपर नीचे बहुत हुआ है, बट एट द एंड ऑफ द डे द वन बैट्समैन who comes between the Pakistan win and Pakistan win and Sri Lanka loss is Abdullah Shafiq, and he is a real talent, जिसको कहा जाता है कि पाकिस्तान में बैटर नहीं मिलता है, ओपनिंग बैट्समैन उतना नहीं मिलता है, बट जो मिलता है is definitely proving the world that he is one of the best. तो यहाँ पे पाकिस्तान श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट गोल में खत्म हुआ। पाकिस्तान ने रोमांचक मैच जीता है 6 विकेट से, और उधर साउथ अफ्रीका ने भी धो डाला इंग्लैंड को, ऑलमोस्ट वन साइडेड डिफीट दिया इंग्लैंड को इंग्लैंड में। और अब देखना है कि वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच, नो डाउट इंडिया जो है वो फेवरेट जाएगी कल, और इंडिया इंडिया एक अच्छी टीम है, वेल कंपोज्ड साइड है, वेल बैलेंस्ड साइड है इंडियन टीम। और इफ एनीबॉडी वांट्स टू ज्वाइन, प्लीज ज्वाइन। ओके, हाउ आर यू? द स्पोर्ट्स ब्रेकडाउन, आई थिंक दिस इज पवन, आई थिंक India will win the, okay, but I want India to win 3-0. This is my desire. India to dominate in West Indies. See, India has been dominating West Indies since long back. I think one point of time I remember in 2005 and 6 where India hasn't won the ODI series, and I think it was in the era of, I think, Brian Lara, when Brian Lara was the captain of India, hasn't won that series. Otherwise, after that point of time, India has won the ODI series and even the Test match series. So India will definitely win the ODI series until or unless will be the rain interruptions.
KL Rahul has just tested positive. So this is the news I am giving you. Sports Breakdown is giving us the news. Just KL Rahul has been tested positive for COVID. I don't know. I don't have any confirmation about this news. First, you confirm this news, Sports Breakdown, Pavan, and then is this sure? It is how much surety in this and truth. Okay, let's discuss. Or doubtful for T20I series? No, okay, that will be okay. If you have any question related to all three games, I think we are going to discuss more of India versus West Indies. See, मुझे लगता है if I'm talking about India versus West Indies, there's nothing to talk about. I think West Indies. If this series would have been the T20I series, then there are lots of topics for this particular series. In the upcoming days, we are going to talk about it because West Indies is a very good West Indies is a very good side in T20I format. But if you see the recent performance against Bangladesh, I think they have made a mockery of this West Indies side in their own backyard. I think they couldn't score around 200 runs in their own backyard. This is absolutely ridiculous because we know that Bangladesh is an improving side. Bangladesh is a very good side in white ball format, but how can you just how can you expect this West Indies lineup? At least I can take a few names who are playing for almost 4 or 5 years, just like I talk about Sri Lankan team also. I talk about Pakistan team also. Just like in Sri Lankan team, this Sri Lankan test side, I think everybody has played around 60, 70 games, even more, and still they play like just they have recently joined the team, or they are still new in the team. In the same way, in this West Indies team, sorry, in this West Indies team, Nicholas Puran, I have seen, we are seeing Nicholas Puran playing for almost 4 and 5 years. Admires 4 and 5 years. Robin Powell, I have seen him way back in 2017-18. So I think if you talk about teams like West Indies, Sri Lanka, they can win here and there few games, but you cannot expect them now to perform consistently enough to win the series. Consistently, the series I'm talking about. If you see, if you take this. See, Hedmire can't pass even one fitness test. This I don't know, but he can certainly bat well. If he can't pass, also no, he can certainly bat. See, Narayan is how many years old is he? Sunil Narayan. I think he is I think limited for only T20I format, and he also thinks himself that okay, I will play only T20, and mainly he will play only T20I leagues, T20 leagues. I don't think way back. I think these things Narayan and all that. Narayan is 20, 32, 33. I have seen in one of the games that his age was written 34, 35. I don't know. This I don't know, sports breakdown. This I don't know about his age. But as far as my knowledge is concerned, I think he has given up the ODI and Test cricket format. If if the West Indies management wants to give him, if West Indies management, it's all about the management and the personnel who is sitting over there. See, Narayan is 34, 35. As and as a bowler, you can't expect
that rhythm, that rhythm to perform in the age of 34, 35, what he was performing. I'm talking about in ODIs and Test cricket format. He was in 4 or 5 years back. So he is not playing for. I see why he is not playing. He should have played for at least a couple of years or at least 1 year for this World Cup. He should have played. I don't know what is the mindset of the players of West Indies. I think they just don't give value to the national games, but they rather give values to the leagues around the world. These West Indies players I'm talking about, and in those players, Sunil Narayan is one of them also. Sunil Narayan, Chris Gale, Kieran Pollard, and all that. These players. So he is not playing for T20 cricket for West Indies as well. Yes, he is just focusing on the T20 leagues, which is playing around the world. I think the Big Bash League, IPL, even you just name the West Indies squad for the ODI series. Sports breakdown. Can you give me the names for the West Indies squad for the ODI series against England? Maybe suddenly you can see all these people. Power. Suddenly you can see all these people. The names you are giving, no. Suddenly you can see the all these people in the World Cup squad for the West Indies. Sunil Narayan, Evan Lewis. Then you have got Simran Hetmeyer and all these people. Please like my channel and please like the videos. You can see all these. I'm telling you, you can suddenly see the names in the squad for the World Cup. Evan Lewis, Simran Hetmeyer. Then you have got Robin Powell is there or not? I don't know because I have discussed only the Indian squad. Okay, he must be writing. Okay. So tomorrow will be the test for few players of Indian team, starting from Shikhar Dhawan. See, Shikhar Dhawan has to get runs because he hasn't got runs in the England series. Whatever he got the opportunities as an opening batter. Shikhar Dhawan as a batter is very crucial for Indian team in the upcoming World Cup. So Shikhar Dhawan has to play well. Shikhar Dhawan needs to score for his confidence also. Otherwise there are options for India to replace him like Deepak Hooda. You got KL Rahul is almost sure that he will grab the opening slot or maybe at number somewhere down the third or fourth position. But apart from that, I'm not seeing until or unless Shikhar Dhawan gets runs. I think Shikhar Dhawan has to score runs as and get long runs. If you are at the crease and if you have played 30-40 deliveries, then get 100, huge 100, 120, 130 runs for Shikhar Dhawan. Surya Kumar Yadav is no doubt is in tremendous form and he surely will get runs in the West Indies series. And if you talk about then Deepak Hooda will definitely get a chance tomorrow. Yes, here comes the West Indies squad for the West Indies for ODI squad against India. Here are the names. So, Sports Breakdown has given us the name. West Indies squad for the ODI series against the Indian team. Nicholas Puran is the captain. Sai Hope. See, Sai Hope is playing. I'm talking about. I told you that few names I have seen playing for more than 5 or 6 years. I hope is one of them, and he hasn't performs up to the expectation of the people of the West Indies fans and the cricket fans like us. Say hope, Samara Brooks is there. Casey Carty,
Holder is a very good all-rounder. I think he is also playing for so many years, 7 or 8 years, or maybe 9 years, more than that also. Jason Holder, Akil Hussain, very good bowler. Joseph Eljairi, Joseph, I think he is a fast bowler. Brendan King is a very good opener. I think he has scored few runs recently against Brendan King's against Ireland only. Kyle Mears, Moti, Robman Powell is a very good hard hitter striker. Kimu Pole is a bowler, and Jaden Sills is a good bowler. So if you see, apart from three or four, I think all are young and all are new, and you can't expect this West Indies team to even come close to Indian side. But if they win at least one of the three ODIs, I think they will achieve these players will achieve a tremendous confidence. So it's a very good series for these players who will gain experience against a top quality and talented, skillful Indian side. If you talk about, I'm talking about few players who are quite experienced, like Nicholas Puran, Sai Hope, Jason Holder. Then you have got Aljari Joseph. You can take Robin Powell. These are three or four players only who are experienced enough. But otherwise, this team is very new. This team is very young. I think India should beat this team comprehensively. If one match you can get close, and one match being the home side, they can snatch one defeat. Dipansu, if you want. There are some good Indian players. Now, please, sports breakdown. You can write the Indian squad, and I will show here. I have discussed, but still I want to compare. See, Carty, Brooks, Brandon Kings, Mears, Moti, Jaden Sills, who see these have got nothing as a experience. Why these players are nothing in front of the skillful, and but still you can expect, being a home side, you can expect a fight from this West Indies side in ODIs format, because the ODIs format recently you have seen. See, recently what West Indies have done against Bangladesh was a very poor performance. You can't expect a West Indies team, a home side, who is very flamboyant. To score not even a 200 in the 50 over format. See, this is very disgusting, and this is very frustrating. So West Indies team needs to improve, and for the betterment of the, there are some good players. I don't think they were. Yes. See, I'm not talking about this. Pawan, if you want to join a sports breakdown, if you want to join, please come. Please have a discuss about cricket, about the West Indies versus India, and please let's discuss 5 to 10 minutes, and then we can close this. So there are some good players, but I don't think they will be competitive against. See, they haven't been competitive enough with the Bangladesh strong side. So I don't think they are not going to see this Indian B side you're talking. I'm not giving this tag Indian B team, because this B team has defeated comprehensively strong A side, strong England side, the full strength England side in the T20 format in the first T20I. You are very rude by saying nothing, please. I'm not rude. See, ground reality sounds rude to everyone. This is the reality. See, if you can't hear the truth, if you can't, yes, we have got the. See, I've discussed about the Indian squad way back to 4 or 5 days back, but still I'm going to show you the Indian squad for the ODI series, leading by the experienced captain, experienced batter, opening batter of Indian cricket team, Shikhar Dhawan. And for Shikhar Dhawan, it should be the series, do or die series.
maybe for his career, for his, because if he don't gets run in this in these three ODIs, I think his place will be in trouble. I think there are many players who are willing to grab his position like Deepak Huda, you can say, even Subman Gill, Prithvi Shaw, these are the players coming, Sanju Samson, these are the players. So I'm reading out the name Indian squad, Shikhar Dhawan, Arshdeep Singh, the left arm. I think he has impressed me a lot. Arshdeep Singh, जो पंजाब किंग्स की तरफ से खेलते थे पिछले साल तक, अवेश खान, अवेश खान जो दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते थे, युजवेंद्र चहल, ऋतुराज गायकवाड़, दीपक हुडा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल एंड सूर्य कुमार यादव. I think this is the same team that play. I don't know about him. I don't know about him. Literally, I don't know. Rutu Raj Gaikwad is there. So there are many players who are waiting for the opportunity to replace Shikhar Dhawan. If Shikhar Dhawan won't get run, no, I'm telling you his place will be in a spot of bother because three or four players are eager to take his place. And suppose if these is one of these players who will get the chance in place of Shikhar Dhawan in the upcoming future in the ODIs, and if he is going to perform, then it will be very difficult for Shikhar Dhawan to come back into the side. I think this is the golden opportunity to Shikhar Dhawan to score low ranked side, I can say, and very inexperienced side. Still, you have to face the bowlers like Akil Hussain, Jaden Sills, Aljairi Sousaf. See, these are mediocre bowlers, but they are good enough to they are good enough bowlers to made you in trouble. So Shikhar Dhawan has to score runs. I'm just worrying about Shikhar Dhawan. Shikhar Dhawan needs to score runs for the betterment of Indian team in the ODIs. Arshdeep Singh is a bowler. Shreyas Iyer, Ravindra. Another point I'm talking about here is the batter like Shreyas Iyer. See, everybody knows. Everybody now Shreyas is exposed to the short deliveries, and now he needs to work on the short deliveries, and he is getting out frequently. But no doubt he will work. Isan Kishan is another one. He can be used as opener batter. And then you have got Deepak Huda. Deepak Huda, no doubt, is the future player for Indian team, and maybe we can see him a regular in the team after 2023 World Cup. Ruturaj Gaikwad is there. Mohammad Siraj, we have seen what he can do in the Test format. Akshar Patel is there, the left arm spinner. He can also handle the bat. And Surya Kumar Yadav, he is in a terrific form, and you can expect Surya Kumar Yadav to go berserk against the mediocre bowling, or you can say good bowling lineup like West Indies. So if you have any question regarding Dipanshu Garg regarding cricket, you can ask, because I'm telling you here I'm discussing about the reality, also ground reality. You can't expect West Indies team to just go through and rip through the Indian batting order, and if they do so, it will be a shocking series for all the Indian fans and the cricket fans. Shreyas doing a lot practice in West Indies with Dravid, but I'm asking you a question: that is he doing the practice of short ball to cope up the short deliveries? If he is doing that, I think he will improve. And he see this Shreyas Iyer is no order, no doubt. He is the future batter. He is the future batter for Indian team who can just control the middle order, because we need him. This I want to see him play. Yes, come 2 3 minutes, please. Come 2 3, please. I like. See, today I'm not going to discuss about the Sri Lankan cricket. See, I'm telling you now, come a little bit of Sri Lanka versus Pakistan, because somebody is eager to know about what happened. See, uh, Sri Lanka batted first. In the Australian series, also in the first test, Sri Lanka opted to bat first.
and scored a mediocre total of 210, 215. I think 212 they have got. I'm talking about Australian series. Again, the batting failed there. In the third innings, when they came to bat, again the batting failed. And these batters of Sri Lankan team from 1 to you can talk 7. I think they have 7 batters, and they are playing for almost 10 to 12 years. They have played 40, 50 games. And the guy who has played only 5 games won the game for Pakistan, a historic chase. You can say at for the Gaul cricket ground, it's a historic chase. But if you ask me, for the last 1 or 2 years, the chasing has been the trend for the teams. Like if you talk about South Africa also, South Africa versus India, South Africa has chased down 2 consecutive scores against a top quality bowling lineup. So I think the pitch behavior has changed little bit in the past couple of years, but no doubt the batters of Pakistan have played very intelligently, and the bowlers of Sri Lanka has bowled very poorly. You can say now the excuses comes that bowlers haven't bowled well. But I am asking, has the batters batted well even in the second innings? No. If you're batting first, you can make 300, 350 plus, but see, excuses are made. But see, they cannot win you a game. Reality is the reality. Pakistan is a much, much better side then Sri Lanka, I have seen many years between these two sides. Pakistan have always dominated Sri Lankan side. Whatever the sides they have played, whether inexperienced side, experienced side. And this is the quality Pakistan batting lineup, I can say. Bowling lineup, I still have a doubt in Pakistan cricket team. This bowling lineup, because see, spinner, they don't have a spinner. Sri Lankan batters have threw their wicket away even in the second innings. Niroshan Dikwela wicket is the free wicket for any team. When Niroshan Dikwela comes to the crease, everybody knows he will get out within 3 or 4 overs. Within 3 or 4 overs, so his wicket is free for every team. And he has started to drop catches also. Dipanshu, if you are listening to me, he is a very, very loose point in Sri Lankan team, Niroshan Dikwela. And because of him, only I can say that Sri Lanka has lost the game because those drop catches, not concentrating on your thing, concentrating on others. I think these things don't matter. I have watched one session of this test match, and in that session, yes, hmm, okay. The sports breakdown has given once again playing 11. I think this is the probable playing 11. Probable or they have announced. I don't know about the latest news because I'm doing this work. Is this 11 is announced before just eve of the start of the match day, or yes, probable? This is the probable 11. I'm going to read it out according to the sports breakdown, that Sikhar Dhawan or Gaikwad or Gill. I'm going with Gaikwad. I'm going with Gaikwad. Oh, this is his playing 11. The sports bound playing 11. You can say it's a good probable 11. See, if you make changes in this playing 11, now that playing 11 is also strong enough to beat West Indies side. But I am going to read it out. This is the sports breakdowns playing 11 for tomorrow's game against the first ODI, which is going to be played at the port of Spain, and which will be starting in the evening time according to Indian Standard Time. I don't know why Pavan. Yeah, Dipanshu, you are correct. Dhawan is the captain, Gaikwad, Gill. I'll go for Gaikwad, Deepak Huda, Sanju Samson is the wicket keeper,
Surya Kumar Yadav. I think Surya Kumar Yadav will come up one position up at the second down. Shreyas Iyer is there. Jadeja is there. Chahal is there. Arshdeep, Avesh Khan, and Prasidh Krishna. I think they should include in this. I will include in this in my probable 11. In place of Avesh Khan, I will include Mohammad Siraz. In place of okay, other I think there is a chance for that guy also, Akshar Patel also. Okay. So this is your playing 11. I think it's good. I think we will see at least two changes from this playing 11. Okay. Okay. So this is the probable 11 for sports grade breakdown, but I will make two or three changes in that. I will bring definitely in place of Avesh Khan. I will bring Mohammad Siraz. I want to see Mohammad Siraz in the white ball form. See if you will not give in this series Mohammad Siraz the test of ODI cricket. I think we want to see also. Sardul can be, but see, this is what we are not getting is so many players are very good enough to make into the playing 11 and to play against this top sides. I mean, top white ball sides. I'm talking about. Okay. 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 So where I was, Dipanshu, you have reminded about the topic I have left. So I was talking about so Sri Lanka versus Pakistan. See, if you see, you can watch from television from far and from here only that Niroshan Bilkubela will definitely get out within 10 deliveries. Everybody knows, and more than and generally he gets out. Rarely he scores 40 or 50 runs. Rarely. If I am wrong, then tell me. See, if your nation is going through this patch, and if your cricket team is playing like this, I think everybody say no. Everybody, I have heard in the commentary. I think not in this series, not in Australian series. Before that also, Gaul is a fortress for Sri Lanka cricket. I don't think Gaul is fortress. I think from the last 10 years they have lost. I think more matches in Gaul only. How can you say that? How can you say that? I think it's very. I think you can't talk about Sri Lankan cricket. I'm telling you the wins they have got. I think those wins. I don't know how those wins have come, but still they have played a very poor cricket. Okay, so leaving this topic here, I will move forward for that one, South Africa versus England. I like the cricket they are playing, South African cricket, starting from the Indian series. See, this is the improvement in the team. Wherever they are going, I think they are willing to beat the team. Okay, Dipanshu, how are you? I am fine, Nitish. Actually, the light has gone. So Okay, no problem. I will be without light. Still, you are visible. Don't worry about that. Where is your friend? I think the sports breakdown. Yeah, I think back now. तो क्या बात कर रहे थे नितिश? Are you getting it? बोल या रहा था मैं मेरी आवाज आ रही है? कि टीम है तो साउथ। हाँ, आ रही है आवाज। बोलो टीम बोलो। अभी जो सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट आया है टीम में, डेफिनेटली साउथ अफ्रीका टीम पिछले डेढ़ यार सालों से। डेफिनेटली मैं तो कह रहा हूँ साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी बन गई है। अगर
बात करें कल के मैच की है, उसमें बहुमा भी नहीं खेल रहे थे, बहुमा की जगह भी बनती थी अभी, पर नहीं खेल पा रहे, मौका नहीं मिल रहा उनको। तो साउथ अफ्रीका की टीम पूरी अभी बैलेंस दिख रही है, कोई भी एक प्लेयर की भी ऐसे नहीं लग रहा कि जगह पे डाउट है। ड्वेन प्रेटोरियस को बाहर बैठना पड़ रहा है फेलुकी की जगह, तो पूरी कंप्लीट बॉलिंग दिख रही है। रबाडा नहीं खेले, तो एक बड़े 3 प्लेयर नहीं खेले कल की सीरीज में, तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखा के वो जीत गए। तो अभी तो साउथ अफ्रीका मतलब इन द वाइड फॉर्मेट पुरानी साउथ अफ्रीका लग रही है जो होती थी। नहीं, उन्होंने वर्क किया है, उन्होंने अपना एरिया मतलब पहचाना है कहाँ पर। सी मार्करम वाज फर्स्ट ऑन और ओपनर बैटर, but they have made the adjustment, the team management had made the adjustment, उन्होंने किया है। उनको लगा कि कौन सी मेरी टीम अच्छी होगी जो बीट कर सकती है अदर्स टीम को। this is how you can make the team, see adjustment, थोड़ा सा फ्लिप फ्लॉप्स करना पड़ता है टीमों को कि कौन सा आवाज आ रही है तुम्हारे साइड से, तुम्हारे साइड से, तुम्हारे साइड ये बीप का आवाज कहाँ से आ रहा है? जस्ट चेक दैट। तो मैं कह रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका नो डाउट इज नो मोर कॉम्पिटिटिव साइड। आई थिंक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के रैंकिंग में मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका थ्रू कर जाएगा, जिस तरह से उन लोग का मोटिव है खेलने का। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि वो इंग्लैंड को हरा देगी टेस्ट सीरीज, अगर है तो। इधर टेस्ट सीरीज है नीतीश, इफ यू नो, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड। या थ्री टेस्ट सीरीज। तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली वो 3-0 यार, 3-0 से तो हारने वाली नहीं, एटलीस्ट वो एक मैच तो डेफिनेटली जीतेगी। तो अगर एक मैच भी जीत जाते तो वो थ्रू कर जाएगी, क्योंकि वो नंबर 1 पोजीशन पर अभी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से भी आगे चल रही है साउथ अफ्रीका। तो बहुत चांस है, ब्राइट चांस है साउथ अफ्रीका का। आई थिंक मुझे लग रहा है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का चांस, सिर्फ कुछ भी हो, उथल पुथल इधर से उधर हो, लेकिन आई थिंक नीतीश, अभी मुझे लग रहा है इंडिया तो मुझे ऑलमोस्ट अभी बाहर लग रहा है, कोई पॉइंट नहीं लग रहा। मैं पाकिस्तान को भी स्टिल चांस दूंगा कि पाकिस्तान अभी भी कर सकती है थ्रू, अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा देगी 4-0। नहीं तो अगर इंडिया को हरा, ऑस्ट्रेलिया को 4-0 हराए, सी व्हेन यू डिपेंड ऑन सम अदर्स, नो देन यू कांट एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू थ्रू। सी दिस हैपेंस अ लॉट इन क्रिकेट। जब अपने ऊपर रहे ना कोई चीज की, जैसे हमको जीतना है 6 मैच और थ्रू कर जाना है, तो वो पॉसिबिलिटी होता है प्रैक्टिकली। बट अपना भी जीतना है 6, फिर दूसरा का हारना है, तो उसमें फिर नहीं होता। साउथ अफ्रीका का रियल चांस मैं बता दे रहा हूँ क्यों है। पहली टीम मेरे अनुसार जो जाएगी, साउथ अफ्रीका ट्रेडिशनली अच्छा परफॉर्म करती है ऑस्ट्रेलिया में, तो डेफिनेटली वहां वो एक मैच जीतेगी, भले सीरीज हार जाए। साउथ अफ्रीका वो एक मैच ड्रॉ करेगी या एक मैच वो जीतेगी डेफिनेटली, वो व्हाइट बॉस नहीं होगी। यहाँ इंग्लैंड में हो सके, इंग्लैंड का टेस्ट फॉर्म अच्छा है, लेकिन यहाँ भी वो एक मैच जीतेगी डेफिनेटली, भले सीरीज न जीते। तो उनके लिए, उनके साउथ अफ्रीका के लिए डेफिनेटली 2 या 3 मैच ही मैटर करता है। वो अगर जीत जाती है, ड्रॉ कर लेती है, तो डेफिनेटली थ्रू कर जाएगी वो। तो प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है इंडिया और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, 3 लोग। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का भी अभी बहुत अच्छा चांस है कि अभी एक मैच हारे हैं श्रीलंका से, कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। पर मुझे तो, मैं चाहता था कोई एशिया से कोई टीम जाए, इंडिया या पाकिस्तान, वो देखना चाहता था। नहीं, इंडिया नहीं जा पाएगी, तुमको हमें रियलिटी बता रहे हैं, सुनो। और रियलिटी इंडिया नहीं जा पाएगा। हाँ, इसलिए क्योंकि सिनारियो ऐसा बन गया है, कहीं एक मैच में और जिस टाइम ये मैच होगा जनवरी फरवरी में, इंडिया में हो सके बारिश का आसार होता है कहीं कहीं पे, और वेन्यू कैसा डिसाइड होता है वी डोंट नो, लेकिन बांग्लादेश से यू कैन एक्सपेक्ट 2-0 बांग्लादेश से जीत जाती है और जीत जाएगी इंडिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से 4-0 हराना थोड़ा सा मुश्किल होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि एक भी ड्रॉ होता है ना, एक भी ड्रॉ, तो वहां पर चांसेस एकदम मिनिमल हो जाएगा इंडिया का। तो टफ है इंडिया के लिए।
पाकिस्तान के लिए नंबर ऑफ मैचेस क्योंकि ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं कि कब वो ड्रॉ करवा लेगी, कब वो हार जाएगी। तो मुझे रियलिस्टिकली लग रहा है अभी तक पाकिस्तान यही अनप्रेडिक्टेबल यही है। ये मैच के बारे में कोई कह रहा था, लेकिन 4th डे का पहला सेशन हुआ ना, मुझे शक लग गया था कि यहाँ पर जीत सकता है, ये लोग जीत सकता है, लेकिन एक खिलाड़ी ने जिता दिया मैच। 160 रन बहुत होता है। नेटवर्क काफी लैग कर रहा है, आई थिंक। नो है तो आपका नेटवर्क लैग कर रहा है बहुत ज्यादा। मैं एक बार मैं लीव करके देखूं। लीव करके देखो। ओके एक सेकंड, 1 सेकंड। One second. Okay, Dipanshu, thank you for joining and please subscribe to my channel, like the video, share the videos। तो एनालिसिस हो गया, प्रीव्यू हो गया इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का। कल मैच से प्रीव्यू अगर होता है, टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली आई विल कम, नहीं तो मैच के दौरान आई विल कम, क्योंकि वेस्ट इंडीज में नाइट में मैच खत्म हुआ तो डे आफ्टर tomorrow I will discuss the review of the first ODI between India versus West Indies। Thank you for joining Dipanshu Garg and the sports breakdown। Thank you for giving all the information। This is the probable 11 according to him, the sports breakdown। So I think for today it's enough। I think we'll meet tomorrow for the next video। Please subscribe to my channel, like the video, share the videos on my channel, In-Depth Analysis with Nitish। Thank you, good night, see you tomorrow।